And we are beginning the bulletin with some breaking news coming in. This as the budget session of the parliament is underway. And the top sources say that there are fissures in the opposition on the logjam over Adani Enterprise. Sources say that Sonia Gandhi has conveyed that the legislative business of the House must be allowed amidst a demand for a discussion and an investigation into Adani Enterprise. TMC also feels that it's important to place on record the statement of the opposition rather than boycotting the proceedings of the House. However, RJD, Aam Aadmi Party, BRS feel that a scandal as big as Adani's requires a separate discussion and it cannot be lost in the vote of thanks to the President's address. Thus, they want to continue with the logjam till the government agrees to a separate, orderly discussion on Adani Enterprise issue. My colleague Kundan is joining me live right now. Kundan, अभी कुछ खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से जहां पे ऐसा लगता है कि जो विपक्षी दल है वो एकजुट नहीं है इस पूरे अदानी मामला पे, जहां पे कुछ ऐसी विपक्षी दलों की पार्टीज है जो चाहती है कि डिस्कशन होना चाहिए, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को रोकना नहीं चाहिए, लेजिस्लेटिव बिजनेस ऑफ द हाउस को चलना चाहिए। बट कुछ ऐसी और पार्टियां हैं जैसे बीआरएस हो गई या आम आदमी पार्टी आरजेडी, वो चाहती है कि जब तक एक सेपरेट डिस्कशन के ऊपर सरकार अग्री नहीं करती है वो इस पूरे प्रोसीडिंग्स का विरोध करते हुए इसका बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल, आज मॉर्निंग में अपोजिशन पार्टी की बैठक हो रही थी, उसके बाद खासकर मेजॉरिटी ऑफ जो अपोजिशन पार्टी थी उनके तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया, प्रपोजल रखा गया कि कम से कम हाउस को फंक्शंस किया जाए, डेडलॉक तोड़ा जाए और जहां तक अडानी इश्यूज पे एक सेपरेट डिस्कशंस की डिमांड कर सकती है। लेकिन जो एक रिचुअल्स है, एक जो परंपरा है कि प्रेसिडेंट्स के जो अभिभाषण के बाद जो उनके डिबेट्स होते हैं उसको प्रोसेस किया जाए, क्योंकि आज तीसरा दिन होगा जहां पार्लियामेंट लगातार डिस्टर्ब है और मुझे लगता है कि इस तरीके की डेडलॉक बनी हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी, जो बीआरएस है और खासकर आरजेडी, 3-4 ऐसी छोटी पार्टियां थी जिनकी बहुत साफ कैटेगोरिकली डिमांड था कि सरकार जब तक इस पूरे इश्यूज पे बैकवुड पे नहीं आती, सरकार ये एश्योर नहीं करती कि वो अडानी इश्यूज पे एक सेपरेट डिबेट्स कराएगी, तब तक डेडलॉक को कंटिन्यू रखा जाए। हालांकि एक लार्जर जो अपोजिशन की यूनिटी है वो अपोजिशन नहीं चाहता था कि एक मैसेज आए कि अपोजिशन पे डिवीजन है और अपोजिशन एक तरह से इस मुद्दे पे अलग अलग रुख अपना रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब करीब करीब डेडलॉक तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर के और गवर्नमेंट के सीनियर मिनिस्टर्स की तरफ से लगातार अपोजिशन के लीडर्स के पास अप्रोच किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि कल से डिबेट इस पे स्टार्ट हो जाए और कल से जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो बहस की शुरुआत होती है, जिसकी परंपरा रही, उसकी शुरुआत कल से कर दी जाए। जी बिल्कुल कुंदन, और हम शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। And we will keep getting you all the updates from the parliament since the logjam as far as Adani Enterprise is concerned. It appears that the opposition parties aren't on board, where there is one section of the opposition parties who want a discussion. They want that the parliamentary proceedings must not be disrupted in this manner. But while there are other opposition parties like the BRS, the RJD, who feel that unless the government agrees to hold a separate discussion on the Adani Enterprise, they are not willing to let the House function. Now, both Rajya Sabha and Lok Sabha have been adjourned for the day amid ruckus and slogans of JPC probe in the Adani row being raised by the opposition parties, and this comes after multiple adjournment motion notices were given by the opposition party MPs demanding a discussion on the Adani Hindenburg report. The ruckus continued in the lower house despite Lok Sabha Speaker Om Birla requesting the opposition to visit him in his chamber and discuss the issue after the first adjournment earlier in the day. Remember, the opposition has continued to mount the attack against the government on the Adani issue, and opposition MPs escalated the attack today and held a protest at the Gandhi statue in the parliament. Congress leader Mr. P. Chidambaram even said that the government isn't allowing the notices despite the opposition demanding a constructive decision.
He added that they will continue to serve notices tomorrow as well, since there cannot be an issue with every MP's notice for it to be rejected. Finance Minister, meanwhile, earlier said that she is willing to answer the opposition's charge on the floor of the House, provided the opposition lets the House function. We do not want to disrupt the House. We want an orderly discussion on a matter of grave public importance. And the only way to discuss a matter of great importance is to give a notice under Rule 267 and seek the permission of the chairman to start a discussion. But every attempt in this direction has been rejected by the chair. And we hope that when we give another notice tomorrow, that notice will be accepted so that a discussion can start. It's completely wrong for the government to portray the opposition as disrupting the House. See, the government cannot hide behind the technicalities of a notice given by any member of parliament. What is the intention of the government is more important. Is the government not ready to come clean on this issue? Is the government not ready for a discussion which involves thousands and crores of the people, thousands and crores of rupees of crores of people of this country? Is the government not ready? Are they not ready to tell the people of this country whereas and who has helped Mr. Adani? Why are they not allowing a discussion on the Adani issue? Why do you think the government is not allowing the notices that is being sent by the opposition party leaders? They must explain that. The reasons, what they want to hide, what is that kind of a conspiracy they have with the person who is under question. The question is this: there are three issues. You open any paper, open any TV, you have Adani being discussed. Today SEBI, which has been saying that everything is all right, today it says it is finding itself in a difficult position as far as the auditing is concerned of the other funding agencies. So you would see almost all these regulatory bodies are also becoming jittery over the issue of Adani. So what I am saying is, let us discuss it. Let us not come to conclusion and point out this. The finance minister is saying that she is willing to take your questions and even reply to your questions, provided you let the House function. What is that we are asking for an orderly discussion? What is she saying? I have given for last 3 days, I am giving adjournment motion at 267 asking for an orderly discussion on this issue. Today, several opposition parties held a protest at the Gandhi statue, but the government feels there is no merit to demand a JPC. Why not merit when this has become an international issue, and LIC and all banks have invested money, and lot of poor people have invested in LIC. They have deposited money in banks. It concerns to crores of people, not one or two. What do you make of the government's stand as far as the Adani Enterprise is concerned? Because they categorically mention is that the opposition's demand for a JPC or a discussion in the House is misplaced, that there is no complicity or the role that the government has to play. This is perhaps the biggest scandal of after independence, and it's difficult to be able to make up the mind that there is no scandal. For that, there has to be an independent inquiry. Only then people will trust the government. So I think that to say that there is nothing to contemplate, they are not the judges in their own cause. It has to be decided by a representative body, and preferably JPC. Even on smaller issues, JPC has been founded in the past. Why should it not be constituted now? And the demand for a discussion in the parliament, because the budget session is underway, do you think it's a legit demand by the opposition party? Well, that's only gives an impression that they are trying to hide something. Now, after
Amidst the ruckus and slogans over the Adani issue has stalled the parliament proceedings, Congress has now taken its demand on the streets with a pan-India stir outside SBI branches and LIC offices. Protests were witnessed across the country, from Delhi to Chennai and even Bengaluru. The party has slammed the government for rejecting its notices and not allowing a discussion on the Adani row, which erupted after the Hindenburg report alleged accounting fraud and stock manipulation by the conglomerate. दिखा देना चाहता हूं, इस वक्त हम मुंबई में मौजूद है। मुंबई का एंटॉप हिल एरिया ये है। सामने एसबीआई का बैंक है और बाहर आप देख सकते हैं मुंबई कांग्रेस के कार्यकर्ता, साथ ही साथ मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप यहां पर मौजूद है और नारेबाजी चल रही है। खास करके ये मांग कर रहे हैं कि अदानी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए ताकि वो भाग न जाए भारत छोड़ के। साथ ही साथ हर्षद मेहता कहे, केतन पारिक कहे, इनके ऊपर कांग्रेस ने कड़ी कार्रवाई की थी अपने कार्यकाल में। उसी के चलते बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक आह्वान दिया है कि तुरंत अडानी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और ये प्रश्न चिन्ह भी उठाया है कि एलआईसी और एसबीआई द्वारा किस तरीके से इसमें निवेश करने को दिया गया, किस तरीके से लोन दिए गए, इस पर जांच होनी चाहिए। और वहीं आप देख सकते हैं दिल्ली में जिस तरीके से माहौल चल रहा है, संसद नहीं चल पा रही है, जेपीसी की मांग की जा रही है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल दायर कर दी गई है। हमारे साथ कार्यकर्ता मौजूद है। क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी, क्या कहना चाहते हैं? हमारी प्रमुख कांग्रेस पार्टी की प्रमुख मांग ये है कि गौतम अदानी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। गरीबों का पैसा एलआईसी, गरीबों की एलआईसी, उसका पैसा उसको कैसा दिया गया उस पर जांच होनी चाहिए और उसका पासपोर्ट जब्त किया जाए, तो देश छोड़ के भाग जाएगा। मुंबई कांग्रेस की एक सिंपल मांग है कि हिडनबर्ग ने जो भी रिपोर्ट दी है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। हमारा एक ही है, जॉइंट पार्लियामेंट बोर्ड में उसकी जांच होनी चाहिए, चीफ जस्टिस के थ्रू जांच होनी चाहिए। तो अगर वो ईमानदार है तो दूध का दूध और पानी का। जाहिर तौर पे प्रमुख मांग यही है कि जो भी चीज बाहर आई है हिंडनबर्ग रिपोर्ट से उसकी जांच की जाए। सारे बड़े नेता जो आए थे, दिनेश गुंडूरा हो या रामलिंगा रेड्डी हो, उन सबको इनफैक्ट आज ये पुलिस के दौरान आज इनफैक्ट उन सबको डिटेन किया गया था यहाँ पे आज इनफैक्ट प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे। लेकिन मामला ये है कि जैसे कि हमने देखा कि देश भर में आज इनफैक्ट पूरे जगह, सारे जगह में कहाँ पे कांग्रेस का प्रोटेस्ट हो रहा था, आज इनफैक्ट प्रदर्शन हो रहा था, वो सारे जगहों में आज इनफैक्ट एलआईसी और एसबीआई बिल्डिंग्स के पास यहाँ की आप देख सकते हैं। हालांकि बैंगलोर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का प्रेजेंस अभी है, वो यहाँ पे इनफैक्ट एक इनॉग्रेशन, एक इंडिया एनर्जी वीक के इनॉग्रेशन को अटेंड करने के लिए आए हैं। तो उसी कारण से आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इनफैक्ट काफी टाइट सिक्योरिटी जो पूरा डिप्लॉय हुआ था अभी प्रोटेस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस लीडर्स का जो मेन डिमांड था वो यही था, दो चीज। पहली बात ये कि इनफैक्ट ये पूरे मामले को थारोली प्रोब किया जाए, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट जज के अपॉइंट हुए जज के साबित। और दूसरी बात ये कि इनफैक्ट ये मामला को फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में डिस्कस करने के लिए इजाजत दिया जाए। तो ये देखना बाकी होगा अभी कि ये पूरा मामला जो है और कांग्रेस अभी आगे और कैसे प्रोटेस्ट को इनफैक्ट लेके जाएंगे।